So this is a rare moment actually. You don't find this cumulative years of experience in Indian sport on one stage. So to begin with, a big round of applause for these women who have made us proud time and again. और जब मैं research करने बैठी इस session के लिए, there was so much information that it's difficult to cover it in one 40-45 minute session. So I just want to say 2 lines each for these incredible women. Ashwini Nachappa से शुरू करते हैं. Ashwini ji is of course one of our most senior athletes on the panel today. She is known as one of the fastest women athletes for India in track and field events. She's represented India in 3 South Asian Federation Games, 2 Asian Games, and also 2 World Championships. And she's also a recipient of the Arjuna Award. Jwala Gutta is here. Thank you, Jwala, for being here. Jwala की बात करते हैं. And I think I should apologize in advance क्योंकि इतनी information है, इतने accolades हैं, I might miss a few, right? So she is of course someone. इनसे पहले tennis doubles की बात होती थी, इनके बाद badminton doubles की बात होती है. So she's brought that recognition to this category of the sport. She's of course represented India at multiple international and national levels, both in mixed and women's doubles. She's won 316 matches in both disciplines. Not a mean feat. सुशीला चानू की बात करते हैं. हाय सुशीला. इन्हें मेकअप बहुत पसंद है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर पहले आपको बताना चाहूंगी, आप जानते ही हैं सुशीला इज एन इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर. शी इज अ फॉर्मर कैप्टन ऑफ द इंडियन नेशनल टीम एंड शी हैज अ टोटल ऑफ 150 इंटरनेशनल कैप्स टू हर एडिक्ट्स. And you're just about getting started. So much more to go. Joshna Chinappa is here. Hello. Joshna, of course, is a professional squash player who was the first Indian to win the British Junior Squash Championship title in 2005, and this was in the under-19 category. Also the youngest Indian women's national champion. Yes, a current record holder of the most national championship wins with 18 titles. Wonderful. What an achievement. Vinesh Phogat is here, ladies and gentlemen. First Indian woman wrestler to win gold in both Commonwealth and Asian Games. Only Indian woman wrestler to win multiple medals at the World Wrestling Championships. And of course, first Indian athlete to be nominated for the much celebrated Laureus World Sports Awards in 2019. Welcome, Vinesh. और इस चर्चा की शुरुआत आपसे करनी पड़ेगी. आपने स्पोर्टिंग फील्ड में तो काफी बड़े काम किए हैं. ऑफ लेट आपने कुछ ऐसे मुद्दे उठाए हैं जो बहुत अहम हैं. You've spoken about sexual misconduct in Indian sport. ज्यादातर होता नहीं है, और जो इंटरेस्टिंग बात रही है कि सपोर्ट बहुत मिला है आपको, जो इससे पहले हमने स्पोर्टिंग वर्ल्ड में इंडिया में नहीं देखा है. क्यों जरूरी था ये करना? काफी साल लग गए इस चीज तक पहुंचने में, इस बात को बोलने में. मैं काफी आउटस्पोकन हूँ बहुत ज्यादा. मैं कुछ भी अगर गलत लगता है तो मैं बोल देती हूँ, चाहे मेरी फैमिली में कोई गलत करे या बाहर कोई गलत करे तो मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ. मेरे को ही इतना टाइम लग गया. पहली बात तो जिसके सामने हम खड़े हैं वो इतने पॉपुलर हैं, इतने पावरफुल हैं, पैसे वाले हैं, पॉलिटिक्स में उनका बहुत बड़ा एक ओहदा है अपना एक पार्टी में. तो और उसके बाद में आप अगर कुछ भी बोलोगे तो सबसे बड़ी बात, जिस रेसलिंग के लिए हम बचपन से हमने जैसे मैं हरियाणा से आई हूँ तो रेसलिंग के अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है. ना हमने एजुकेशन को इतना टाइम दिया, ना हमने किसी और फील्ड में इतना टाइम दिया जितना हमने रेसलिंग में दिया है. और वो रेसलिंग छीन जाएगी वो डर बहुत बड़ा था, क्योंकि हम इतनी नॉर्मल फैमिली से आते हैं कि हमारा रेसलिंग से ही हमारा फैमिली का भी नाम हुआ है, या जो भी जिंदगी जीने के लिए जो अच्छी सुविधाएं होती हैं वो हमने रेसलिंग से मिला है. अगर वो रेसलिंग खत्म हो जाएगी तो फिर मतलब क्या रह जाएगा हमारे पास में. तो वो चीज़ ने काफ़ी रोका है. लेकिन एक डर होता है, लेकिन वो डर की भी मैं बोलती हूँ कि हद होती है. वो डर की हद से हम गुजर चुके थे. इतना हमने सहा है, इतना टॉर्चर मैंने तो पर्सनली बहुत सहा है, क्योंकि मैं जब भी कुछ गलत होता है मैं बोल देती हूँ, और वो बोलने का खामियाजा मेरे को 4-5 साल तक भुगतना पड़ता है. वो मैट के ऊपर चाहे चीटिंग करते हैं, जो मैच होते हैं, जो ट्रायल्स होते हैं इंडिया में हो गए, ये आपको मेंटली टॉर्चर करते हैं. और आपको पता है कि स्पोर्ट्स में
मेंटल प्रेशर वैसे ही कितना होता है एथलीट के ऊपर, ऊपर से ऐसे लोगों का प्रेशर जो आपको इस तरह से तोड़ना चाहते हैं कि आप बता भी नहीं सकते सामने वाले को ये कैसे आपको ब्रेक करें। हर दिन जैसे बोलते हैं कि एक कोई कीड़ा होता है वो अंदर से आपको खा रहा है लेकिन आप किसी को बोल भी नहीं सकते, तो वो कीड़े के जैसे वो सिस्टम आपको खा रहा है लेकिन आप बोल नहीं सकते। बट वो डर की एक लिमिट से गुजर चुके थे, हर एक चीज की लिमिट से गुजर चुके थे। और जैसे मैं जब भी रात को सोती थी या सुबह जैसे ट्रेनिंग में जा रहे हैं, जीत रहे हैं, एक मेडल अपनी जगह है, अगर कुछ भी हो जाता है तो हमें ये था कि हमारे पास तो काफी इनफ है, मैं तो सरवाइव कर गई, मैं आज जिंदा हूं, मैं खड़ी हूं, मैं लोगों को बोल सकती हूं। और सबसे बड़ी बात कि मैं इस लेवल पे हूं कि अगर मैं बोलूंगी तो शायद मेरी आवाज सुनेंगे। वो चीज काफी हमें पुश किया है कि आज हम इस लेवल पे हैं। अगर क्योंकि बहुत सारी लड़कियों ने बोला है कि दीदी आपका तो नाम है, आप तो बोल सकते हो, आप क्यों नहीं बोलते, लेकिन वो क्यों का ज्यादातर लोग डर जाते हैं विनेश, और ये बात कहना जरूरी है बिकॉज यू नो फेडरेशंस आर पावरफुल। देखिए ये पुरुष प्रधान समाज है मैं बोलूंगी, और लड़कियों के लिए खेलना और हरियाणा जैसे स्टेट से निकल के खेलना बहुत बड़ी बात है। हरियाणा में चेंज हुआ है तो वो स्पोर्ट्स में हम लोगों ने हिम्मत की है, फैमिली ने पुश किया है, तो मैं नहीं चाहती कि जो स्पोर्ट्स में इतने साल तक हमने जो चेंज किया है वो चेंज फिर से उधर ही दब जाए, फैमिली डरने लग जाए स्पोर्ट्स में भेजने के लिए। मेरी खुद की नाइसी है, वो रेसलिंग करना स्टार्ट किया है उसने। जब भी मैं सोचती थी कि चलो मैं तो सरवाइव कर गई, लेकिन अगर वो रेसलिंग में आ गई और उसके साथ में कुछ ऐसा हो गया तो क्या मैं बर्दाश्त कर पाऊंगी उस चीज को। तो ये क्लीन अप इंपॉर्टेंट है फॉर फ्यूचर जनरेशंस, जो विनेश कह रहे हैं, ये बहुत अहम मुद्दा है। ज्वाला, आप बात कर चुकी हैं पहले अबाउट डिस्क्रिमिनेशन, अबाउट हरासमेंट। जब मी टू मूवमेंट हो रही थी भारत में, पूरी दुनिया में, यू ब्रॉट इट अप। डिड यू एट दैट टाइम गेट द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट विनेश हैज गिवन टू सम ऑफ द रेसलर्स? I mean, I was just telling her that, you know, that it's very heartening to see that so many athletes, you know, especially the male wrestlers who are sitting with her in support of the cause and the, you know, for what she's fighting for. My case was I was completely isolated. I was threatened. I was called home and threatened. And then I had no choice but to knock the doors of the court, you know, High Court in Delhi. You know, as an athlete, I think they'll all agree with me. As an athlete, you just want to play, you know. You don't want to. अगर सब अच्छा है, if you're being treated well, you are, you know, कभी लगता है कि हम जो deserve करते हैं उससे शायद कम मिले, वो भी ठीक है. But then when you're not treated well and when you're targeted, you are somewhere, you know, you have to fight it because I can't expect another fellow athlete to come and speak for me, you know. And अगर सब अच्छा है तो मैं क्यों fight करूँगी? Like why? Because 8 से 10 घंटे you are giving physically every day to a sport. And you don't have energy to do anything else. But it's unfortunate, you know, and we live in a patriarchal society. पर शुरुआत अच्छी हो गई आपको लग रहा है जो विनेश ने किया है? 100%. I think बोलना चाहिए, as she said that शायद उनके लिए maybe, you know, she has reached a level. We are in a powerful position today, where privileged position where our voices are heard. Yeah. And I think we are doing this for our future generation, because tomorrow if I have a girl, I should not be scared to put her in sport. 100%. That's or in anything. Yeah, absolutely. Ashwini ji, you're the senior most athlete on the panel today. जब आप ये instances सुनती हैं that, you know, sexual misconduct की बात हो रही है, discrimination against women athlete की बात हो रही है, आपको लगता है कि कुछ भी चेंज हुआ है इंडियन स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में फ्रॉम द टाइम दैट यू वर देयर? I think what has changed from the 80s is today we see a lot of women across board. It's not just sport, but speak up against discrimination. We see a lot of young children coming forward. There has been a change and people are noticing, and media is catching it. Earlier stories were not heard, they were not told, and you come from a society, just as Vinesh rightly said, the Indian sport
for the last 6 to 8 decades have been controlled by the big wigs in politics. And for that to change, it takes a huge amount of effort. And most of us are here because of our family support, not because a particular person in any federation found us and made us who we are here. It is only because our families have supported us. I come from a very, very average family where my father was the only working member. And I remember my mother would walk 3 to 4 kilometers, bringing lunch to school, taking us back for training. But those are things that didn't matter when you reached at the higher level. It's just that you needed to perform. And all that we wanted was to be treated fairly. I've been lucky being outspoken. Nobody dared to talk to me, whichever person was ruling the federation, because I always stood up. But sadly, none of the other sportsmen in our times would even speak up. And I think somewhere I feel sportsmen are to be blamed for the situation that Indian sport is today. Do you think it's time for a complete overhaul of Indian sports administration? I think the process has begun. Way back, I think all of you all know about the Commonwealth Games, what happened. And that's the time in 2010, 8 to 9 of us got together to start the Clean Sports India movement. You won't believe it, the movement was launched just before the Games at Delhi, at the Indian Heritage Center, and there was just barely a few media who came to even, talk about it or even capture what we were saying and why we were saying it. Because the stadiums were empty, tickets were not available, children who trained in stadiums were not even able to go see games that we are hosting. And when we launched it, the entire media was caught up because it was also controlled. And then we know what happened at the games. So I'm saying it takes a lot of guts, it takes a lot of strain on oneself to actually come out, because all of us today are, as Jwala rightly said, privileged, and we can stand up on our own. But back in those days, even for us, the way we were treated, Nehru Stadium was our home, but on the track when we are finishing our training after 3 hours, and you see heaps of omelette being stacked up on the back, and we have to come back and eat that. Nobody dared to even question it. I remember bringing Mrs. Margaret Alver to the Nehru Stadium saying, we are not going to eat it. And you've got to change our diet. We cannot be eating like this. And it would be changed for a few days, but none of them would support you. Sushila, क्या चीजें बदली हैं? Do you think you're playing for India? और जो अश्विनी जी कह रही हैं, आप उससे relate कर पा रहे हैं? अभी तो मतलब बहुत बदली है. वैसे अभी गर्ल्स पावर भी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होने लगी. अभी मेडल्स भी देखे जाएगा तो गर्ल्स ही ज़्यादा मतलब अभी हो रहे. तो मुझे पूरा एग्री है. सो क्या बोलूं, कुछ बदला है पर बहुत कुछ बदल सकता है. बहुत कुछ बदल सकते हैं और अभी भी बदल रहे हैं. क्या बदल सकता है बताइए. थोड़ा फेस टू फेस हम सामना एक दूसरे को, जो भी मतलब अंदर में रहते हैं उसको हम बात करना चाहिए. हम साई करते हैं एक दूसरे को बताने में, और फ्रेंड्स सर्कल में भी होगा तो मेरा कुछ हो गया तो इनको बताया तो थोड़ा सा और शेयर करेंगे तो और ज़्यादा हम एक दूसरे को जाने लगी, और शेयर करेंगे तो फिर आगे मतलब थोड़ा ऊपर आएगा और खेलने में भी और थोड़ा हेल्प मिलेगा, क्योंकि डर के हम नहीं खेलेगा उसमें. Joshna, would you agree? I mean, we are hearing from all the panelists today, and it seems like this is a problem that has existed for a while, and it's continuing. But things are not okay. Well, I definitely think that we've come a long way from, when I probably started out and there was no awareness and we were so dependent on the federation doing their job properly. And, I've also faced my fair share of struggles with them. And to be honest, the only reason I was able to overcome it is because my parents took a stand and they were like, you know what, this is not okay. And we're going to make sure that we fight for your right to play. And of course, now things are a lot better. There's a lot more systems in place. And I think today, if you're facing certain situations, I do think our voices are a lot more heard. But having said that, it only
is heard more when you're more established, and when you have achieved certain things is when people actually take you somewhat seriously. But I think it needs to change where people who are coming up as well need to be equally supported, because they're not able to speak out, because then their career is kind of like, you know, threatened in whatever capacity. And I think that needs to change a little bit, where we all feel equally supported. You know, one thing is quite common, and all of you have kind of said it, is that it's your families that have supported you, right? Progressive men. Progressive in my men. Family. I think, yeah. I think when they say, you know, a woman is behind a successful man, Yeah. I would tell this that behind every successful woman, it's a progressive man, for sure. Bilkul. And my dad is, Bilkul. So I think for the men in the house, I think 100%. I'm very glad to hear that from you. You Yeah. take you take contact sports. I mean, Haryana would not be, you know, churning out such wonderful women athletes. It's only because of their fathers who have just pushed them into it and ensured. From the akhadas, they've come to where they are. So it's the mindset needs to change in the governance of sport. मेरा सवाल एक्चुअली यही था, that you know families का support तो है, which is why you all are where you are today, right? But Vinesh, किस तरह का support एक athlete को चाहिए? Federations के through या government के through, ministry के through, किस तरह का support आप चाहते हैं कि वहां से आए? एथलीट के पास टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी वो होता है, हमारा एक टाइट शेड्यूल होता है कि मॉर्निंग में ऐसे करना है, आफ्टरनून में ऐसे करना है, तो वो टाइम का अहमियत फेडरेशन को पता होना चाहिए कि एथलीट का टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है। हम ऐसा नहीं है कि हम मन करे तब तक खेल सकते हैं, एक टाइम पीरियड है, उसके बाद हमें गेम भी छोड़ना पड़ता है। तो उसमें चाहे स्पोर्टिंग स्टाफ जो है वो अच्छा होना चाहिए, वो इतना हेल्पिंग होना चाहिए, क्योंकि जितने हम पुश कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन पीछे से जो पुश मिलता है उसका हमें प्लस पॉइंट ये होता है कि इंजरी से हम बच सकते हैं। या एक मेरे को माइनस पॉइंट जो अपने कंट्री में लगता है, कोचिंग का जो स्टाइल है या कोचिज जो है वो उस लेवल के ही नहीं है रेसलिंग में। क्योंकि मैं देखती आई हूँ जो स्टेट खेलते हैं, नेशनल में जिन्होंने पार्टिसिपेट कर लिया, वो नेशनल कैंप में कोच बन के आते हैं और वो ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं हमारे साथ में। क्योंकि फेडरेशन ऐसे लोगों को खुद लगाती है जो उनकी चमचागिरी कर सके या उनकी हर चीज में हाँ जी बोल सके, वो ना बोले तो ना जी बोल सके। और जो अच्छे एथलीट हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी रेसलिंग में एथलीट नहीं है अच्छे, जो अच्छे एथलीट हैं वो हाँ जी बोलेंगे नहीं, वो हाँ जी बोलेंगे तो ना जी बोल सकते हैं, उनमें इतना करेज है तो वो उनको कभी लगाते ही नहीं है। तो हर एक स्पोर्ट्स में ये है कि अच्छे पर्सन जब स्पोर्ट्स में आएंगे, जैसे अभी मुझे काफी खुशी हुई थी जब आईओए में जब पीटी उषा मैम का नाम आया था, तो ऐसे लगा था कि एक मेडल हमने ऑलरेडी ओलंपिक्स में जीत लिया है। कितना टाइम लग गया किसी स्पोर्ट्स पर्सन को उस पद पे आने के लिए। वो चेंज अगर हर एक फेडरेशन में हो जाए, स्पोर्ट्स पर्सन अगर उसको लीड करें, वो माइंड सेट भी समझ सकते हैं एथलीट का, वो हर रिक्वायरमेंट भी हमारी समझते हैं, वो इमोशनली भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और एथलीट को हर एक चीज की जरूरत होती है, क्योंकि फैमिली से तो हम दूर रहते हैं, फेडरेशन हमारा फैमिली हो जाता है और उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें मेंटली वेलबींग रखना, हमें हेल्दी रखना, हमें पुश करना। तो वो एक मुझे ये लगता है कि गवर्नमेंट तो देखिए काफी सपोर्ट करी है अभी, क्योंकि मैं खुद मैं 10 सालों से सीनियर लेवल पे मैं खेल रही हूँ, मैं देखती आ रही हूँ कि कितना चेंज हुआ है, जो टॉप स्कीम आया है। लेकिन फेडरेशन वो टॉप स्कीम को भी काम नहीं करने देती अपना, उसको भी वो पकड़ती है कि वो चाहते हैं कि हर कोई उनके हाथ के नीचे रहे और वो हाथ के नीचे ही रहे, उससे ऊपर जो भी उठने की ट्राई करता है वो उसको दबा देते हैं वहीं पे। मुझे पता है अश्विनी जी wants to add to this. See, these smiles are very telling. You must notice. No, I don't think you should ask these questions to competing athletes, you know, because you put them in a spot. But people like us can just, you know, blabber and say what happens, because I used to blabber even back then. That's it. That got me into a lot of trouble. Well, I अब तो हम इस लड़ाई में इतना आगे बढ़ गए हैं कि जान हथेली पे है, कोई भी ले लो। ऐसा सोच के हम आगे बढ़े थे, तो डरने का तो अभी सवाल ही नहीं है, डर तो पीछे छूट चुका है, अब तो जो है वो जीत और आ रही है जी। You know what happened when the entire women's hockey team complained against a particular coach almost a decade back, and they were hiding for almost 26 days.
and they had called me from somewhere to just seek help. I'm saying that was the situation then. They weren't able to even speak about it. They were running away because they were getting threatened. And they wanted me to connect with the women welfare organizations to see how we can bring them out. And, you know, when the ecosystem for a child, we all, I mean, as young athletes, you get into the Indian system, if you're lucky enough, like most of us got in by the age we are 15 or 16. And we really don't know. We are still young teenagers who are still learning about life. And if the ecosystem is not there, for us it never existed way back in the 80s. But today things have changed. There are great resource people. You outsource people in various... but as Vinesh rightly said, it is still controlled. Whoever you bring in is controlled by the person running and managing it. And if you are not sensitive to young children's issues, you have committees that are formed by the organization and not somebody outside. So these children would not be able to even speak up to them. So the kind of people that you place, you're sensitive to issues, you're sensitive to gender issues, it's a lot to take in. Absolutely. I mean, the attitude needs to change. The attitude is still like, हाँ खेलती है, कूदती है. ज्वाला कैसे होगा attitude change? क्योंकि देखिए ये बात उठी है पहले, ऐसा नहीं है. क्योंकि हम जब जीतते हैं, तब that claim of being an Indian is like, yeah, she's Indian, वो जीत गई, भारत की बेटी, हमारी बेटी, and all of that. But before that, whatever happens, you know, they don't know how much you have to literally, you know, wrestle every day, 8 to 10 hours. It's not easy, you know. And the attitude is like, हाँ खेल रही है, कूद रही है, मजे कर रही है, you know. That's the attitude. Like I am former Bharat Petroleum. I just resigned because I have my own academy now. So when we were taken in by Bharat Petroleum, I used to go there to claim my TADA. That was the system when, you know, much young, 18, 20 years. That time the employees' attitude towards us was like, look at them, free salary leke ja rahe hai, you know. But we were, and then I had an argument with one of the employee, like, why are you throwing this attitude? My company has employed me to play for them. You are sitting 9 to 5. I wake up at 4:30. And I go home at the end of the day around 8 o'clock. So I'm grueling maybe harder than you. I'm not taking away from you, but you know, you cannot have this attitude. So this is the attitude I see even today, that sports as a profession is not taken seriously. It's taken as a good hobby, good habit to have. But till they don't win or till a player doesn't perform, she or he is not taken seriously, because sports is a good habit to have. But Jwala, I think that's because now I have an academy. I see that attitude. No, but young parents really don't know what the structure is available. Unless a structure is there for every sport 100%. And a parent knows. Which is what my this is the level that one goes in. कि अगर change चाहिए तो कैसे होगा change? Because देखिए बातें हो रही हैं, बहुत सालों से हो रही हैं, but क्या tangible measure आज लिया जा सकता है? That's what I meant. The structural change is not happening because even the people in the association who are supposed to take care of the welfare also have that kind of an attitude. विनेश, आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी, आज इसी समय क्या ऐसा एक स्टेप लिया जा सकता है जिससे आप लोगों की जिंदगी है थोड़ी आसान हो जाए? आई थिंक स्पोर्ट्स से अगर पॉलिटिक्स दूर हो जाएगी तो आधा काम तो वहीं पे खत्म हो जाएगा. स्पोर्ट्स पॉलिटिक्स हैज मोर पॉलिटिक्स देन एक्चुअल पॉलिटिक्स. लोग पॉलिटिक्स में पावरफुल होने के लिए स्पोर्ट्स का यूज कर रहे हैं. वो यूज करना बंद करें. स्पोर्ट्स को स्पोर्ट्स की तरह रखें. क्योंकि सब पॉलिटिशियंस ही रन कर रहे हैं फेडरेशन. तो वही पॉलिटिशियन अगर दूर हो जाएंगे तो आधा काम तो वहीं पे हो जाएगा. जब स्पोर्ट्स पर्सन उस पोजीशन पे बैठेंगे तो वो जब संभालेंगे उस चीज को तो वहां से काम स्टार्ट हो जाएगा. अगर कोई सुन रहा है और कोई मेरे एक्सपीरियंस में स्पोर्ट्स पर्सन भी पॉलिटिशियंस बन जाते हैं. दैट्स इन माय एक्सपीरियंस. सो देयर इज नो गारंटी. Known devil is better than the unknown. No, because what happens, I have been thrown this attitude by my seniors कि हमें तो कुछ भी नहीं मिला, तुम्हें जो मिल रहा है खुश रहो.
बिल्कुल बिल्कुल You know, ये सेम अश्विनी जी, so- आप उस ग्रुप में तो नहीं है ना? Never, 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 never. No, I don't think there are exceptions for sure. No, I'm But- sure, I'm sure. नहीं So- जो जवाल आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, ज्वाला जी जो बोल रहे हैं वो सेम है. हर स्पोर्ट्स पर्सन भी अच्छा नहीं है. आप उनका रिकॉर्ड निकालिए या आप उनका ह्यूमन लेवल पे वो कितना सेंसिटिव है, या वो स्पोर्ट्स पर्सन तो अच्छे हैं लेकिन वो नॉर्मल लाइफ में कितने अच्छे हैं, वो देख के उनको बिठाना चाहिए. डेफिनेटली वो चीज है, मैंने भी देखा है. Sorry. One thing I think what we need is a good program for coaches. There's a dearth of coaches. There are no coaches in our country. One coach in the whole of the country is just known in, I think, you don't know anybody else's coach. So we need to have special programs. We need to make good coaches. You have good coaches, then you'll have good athletes. It's as simple as that. We don't give importance to our coaches in our तो country. आई थिंक दो अहम मुद्दे यहाँ पे हमने सामने रख दिए कि पहली चीज वी नीड मोर स्पोर्ट्स पीपल गवर्निंग स्पोर्ट्स इन इंडिया. तो पहला तो कंक्लूजन ये निकल No, गया. Radhika, I think it's more professionals running the sport. More professionals professional. running the sport. Yeah. It's not necessary that every coach is a good administrator Yeah. or every athlete is Yeah. a good administrator. So I think it's important that more professionals come into the management of sport. And also it should be under an umbrella which is autonomous, which actually manages and holds federations accountable. Just this afternoon I was in a sportscom meeting and we had the dope testing chief on the panel. And I asked her just one simple question. If any of you all have ever witnessed a junior championship for under 14 and 16, because I organize, in fact we used to organize the biggest junior level sports in Bangalore along with KPMG as our means. We did it for 14 years. Mohandas Pai was very, very keen that we have numbers and many children getting into the program. You won't believe it, for under 16 and under 14, you will have syringes all over the track. You will have syringes in the toilet. And these kids, even if you give them just, saline drops, they wouldn't know. But I'm just saying, that's the kind. And in one of the championships, what I did is I just called up NADA and I said, I just want you to be there on the final day. Just for 5 events, give me 5 samples. You don't have to give me the result, but just be there to take 5 samples. And you won't believe it, 14 and 16-year-old children didn't come for the finals. So there needs to be a lot of education. There needs to be a lot of capacity building. There needs to be an environment that is created for parents to say, I'm confident to send my child onto the play field. Absolutely. There's no security, and I think that's what. I think you articulated that very well, so I'm not going to repeat that. But I think we now need to move on to something a little bit lighter, because आखिरी session है, we should be talking about some fun stuff as well. तो I think आप सबसे पहली चीज तो ये पूछना चाहूंगी that what is your favorite sport other than your own? विनेश, आपसे शुरुआत करते हैं. रेसलिंग मेरा पहला एक वो नहीं था कि स्टेप. फैमिली ने पुश करके रेसलिंग करवाया है, लेकिन अभी तो डेफिनेटली मैं रेसलिंग को लाइक करती हूँ. बट मैं बचपन से टेनिस खेलना चाहती थी. और मैं आज अगर मैं बैठी हूँ तो मैं बोल देती हूँ, सानिया मिर्जा की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ. बचपन से ही उनके पोस्टर देख देख के मैंने स्पोर्ट्स में इतना इंटरेस्ट लिया है. तो वो कहीं सुन रहे हैं तो प्लीज मेरे से कभी मिलना. Wonderful, wonderful. Joshna, what about you? I'd probably say badminton, probably all the racket sports. But badminton is fun. I always feel like I could have had an alternative career in that, but it's too hard. I tried hockey and I found that the hardest sport I've ever played. So I'm sticking only to the racket sports. सुशीला, तो आप तो एक टफ स्पोर्ट खेल रही हैं. So what is the other choice that you have in mind? मैं अदर चॉइस करना चाहूँगी तो बैडमिंटन मुझे पसंद है खेलना. Badminton queen is here. Yeah. So. We all can join Jwala's academy now. All are welcome. Yeah, I want to join. But Jwala, अगर बैडमिंटन नहीं तो क्या? I started off with tennis. अच्छा. Yeah. Okay. But like my mom was like, नहीं indoor sport, खेलो. काले हो जाओगे. काली हो जाएगी. But that's true.
And then, but I love watching tennis. For me, I'm little worried about contact sport, body contact sport. So thoda dur reh ke khelte. So for me, it's tennis. Wonderful. Ashwini ji. Well, I loved playing hockey. I was, playing for my school hockey as a right extreme. But if it is a tough sport, we didn't have much option growing up. Athletics was the cheapest. You have a Bata shoes and you run with it. We ran barefoot because we couldn't get a spikes at that point in time. My PE teacher, who was from Ceylon, brought my first spikes from school. I still remember wearing that and running. But I enjoy playing golf now. Oh, nice. Yeah. I watched Ashwini's movie, and usme I came to know that, people are very competitive. So I've never had water from anybody else's bottle after that. Wow. Because because there was that scene where in your shoes, that was traumatizing. So actually that brings me to the next question. What is your favorite movie that's based in sport? Let's start with you, Jwala. With me? Yeah. Tough one. I don't remember, yeah. I'm a movie buff. I watch everything. Okay. I think I liked Goal. Yeah. The first part, not the second. The first one. Yeah. Okay. Ashwini ji, same. I'm not a movie person at all. Though I did a couple of films, I don't really, but I did watch Goal and I enjoyed it, yeah. You've starred in your own story, if I'm correct, yes? Well, Hidden talent, she's also an actress. Sushila, आप बताइए, favorite movie? मेरा फर्स्ट फेवरेट चॉइस तो चक दे इंडिया है और कितना बार भी देखूं मैं मन नहीं पड़ता वो चक दे इंडिया से इमोशनल मतलब वो देख के मतलब फील होता है मतलब वो शाहरुख खान एंड दबंग आल्सो दबंग भी बहुत अच्छा मुझे लगता है वेरी नाइस जोशना well obviously Chak De India because that's probably the first sports movie I watched and probably Mary Kom as well I really enjoyed that as well that was fun wonderful Vinesh आपके लिए choices हैं काफी रेसलिंग से तो मैं दूर रहना चाहूंगी अभी फिलहाल के लिए लेकिन चक दे इंडिया डेफिनेटली मेरा फेवरेट है और उसके बाद मैरी कोम दंगल मुझे इसलिए नहीं पसंद आ रही है क्योंकि हमने जो देखा है उसका कुछ भी % उसमें नहीं है तो हम रियलिटी जानते हैं कि कितना था तो वो हमें नहीं बना रहा है बबीता से बात करनी पड़ेगी ये तो गड़बड़ हो गई नहीं मैं उसमें जो दिखा रखा था वो तो कुछ भी नहीं था हमने इतना कुछ झेला है ना वो उसमें मूवी में आ ही नहीं सकता उसके ऊपर तो सीरीज बनाना पड़ेगा आपको और वो भी पार्ट्स में तो जाते जाते एक सवाल आप सब लोगों से है हमने अभी डिस्कस किया देयर आर सो मेनी चैलेंजेस राइट मतलब कई लेवल पे मल्टीपल चैलेंजेस हैं उसके बावजूद आप लोग हर रोज उठते हैं घंटों तक ट्रेन करते हैं एज एन एथलीट यू गो एंड पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड यू मेक इंडियंस प्राउड व्हाट इज द थिंग दैट मोटिवेट्स यू जब प्रेशर के साथ साथ और इतनी पेरिफेरल प्रॉब्लम्स हैं आपकी मोटिवेशन क्या रहती है विनेश टू परफॉर्म वेल गिव इट योर 100%? सबसे पहले तो फैमिली का याद आता है कि फैमिली ने कितना पुश किया है तो कभी अगर गिव अप करने का भी मन करता है तो वो जो लोगों की होप है जो काफी एक पूरे देश में जितने लोग हमें पसंद करते हैं या जो ओलंपिक सपोर्ट को जो पुश करते हैं या देखते हैं तो वो एक फैमिली है हमारी तो उनकी जो होप है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ाती है और दूसरा कि एथलीट हैं तो हमें ये प्रूव करना है कि हम गिव अप नहीं कर सकते क्योंकि हम ये लगा लीजिए एक आइडल है सोसाइटी के लिए एक आइकन है अगर कोई अच्छा संदेश दे सकते हैं किसी को भी तो स्पोर्ट्स के थ्रू दे सकते हैं तो वो रहता है कि अगर स्पोर्ट्स में अच्छा करेंगे लोग आपको देखेंगे तो हम हर गलत और सही को भी हम बोल सकते हैं और वो सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं बिल्कुल जोशना आप क्या कहेंगी For me, I started like really early. Like I knew that playing for India was, the goal. That was my plan from the time I was 10. So that's honestly been my biggest motivation, and it is even still today. Like when I know that there's a big games coming up, and I have to train really hard and seriously. And I think that kind of really keeps me on track. Even when I lose my way a little bit, it just kind of brings me back that I have these goals that I want to achieve. So I would say playing for India and winning medals for the country. Wonderful. Sushila, आप बताइए और आपसे बहुत उम्मीदें हैं.
हाँ हाँ जी, हमने मतलब टोक्यो ओलंपिक से पहले लॉकडाउन भी हुआ था। उस टाइम पे हमारी टीम ने बहुत सेक्रीफाइस किया कि हम घर तक भी नहीं गई, हम बेंगलोर में एक साथ रह के हमने ट्रेनिंग किया और उसके बाद लॉकडाउन हो गया तो हम कई लोग तो मतलब घर भी पहुंच गई थी। फिर वहां से फिर घर से फिर वापस बुलाया कैंप में, ताकि हम तो टीम गेम है तो अलग अलग तो हम प्रैक्टिस नहीं कर सकती, तो एक साथ हमने प्रैक्टिस करने के लिए पूरा बुलाया। और उसके बाद लॉकडाउन हुआ तो और उसके बाद हमने 10,000 घर के लिए हमने सोशल मीडिया में हमने एक्सरसाइज करके और उसके बाद डोनेशन करके हमने खाना प्रोवाइड किया। और उसके बाद हमने टोक्यो में तो इतना क्या गर्मी था तो हमने विंडशीटर पहन के फिर ट्रेनिंग करना और ये सब करना, तो हमने बहुत हार्ड वर्क किया। तो उसकी वजह से हमारे टोक्यो में भी मतलब गॉड की वजह से हमको थोड़ा मतलब प्यार मिला लोग से। और How lovely. Yeah. How lovely. That's really nice to hear. ज्वाला, आप बताइए मोटिवेशन क्या रहती है एक एथलीट की? Well, जब मैं I think I was just 4 when I started, playing sport. Or when you're kids, you really don't know what is determination, dedication, discipline. I think मेरे डैडी आज तक उनके ऑफिस टाइम पे कभी नहीं गए, बट मेरे ट्रेनिंग के टाइम में we are always on time, So, or years after years, it kind of becomes a habit, that routine, that discipline, it comes. But obviously you see it in your parents who have dedicatedly pushed you and taken you, to my practice every day. So whenever, there were a lot of times where I thought, bas, enough, I'm done with this. But then when you just sit back and you want to quit, suddenly it's, you have this vision of your dad and your parents, putting in all the work, and, you just don't want to make that go waste for something which I can probably fight it. So it's definitely my family and my coach who have motivated me. Ashwini ji, last word to you. Well, family is, of course, the biggest motivator, but I think it's very important to be self-motivated too. For me, I thrive on challenges. It's purely mind over matter. In whatever field that I do, whether it was sport or my movies or even running an institution. Today I have 850 students from Montessori up to 12th grade. It's just that you thrive on challenge. And I always feel in whichever field one gets into, we should not wait for luck to happen, because when preparation meets opportunity, luck falls on your lap. And I think I enjoy the process. I enjoy, being with young children, and I think every day is a new day for me. So I look forward, and it motivates me to do something. While I get back to sleep, I can say that today was a good day. I did something worthwhile. So it's always motivating. Wonderful. I think that's a great note to end this session on. Thank you all. Women with guts who've been bringing us glory. Thank you all so much. ABP Majha. उघडा डोळे बघा नीट.